Hello friend, welcome back to my channel. So today we are going to learn data visualization in Python. तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. So without wasting time, let's go to the code. Okay, तो हमारे पास ये यहाँ पर डाटा विजुअलाइजेशंस. डाटा विजुअलाइजेशंस क्या है? डाटा विजुअलाइजेशंस allow you to present the data in a visual context such as chart, graph and map, making it easier to identify trend, pattern and outlier. So let me do first. I am going to importing the some library in order to do this one, and the basic library have to be understand. So I am importing the library. Importing library is nothing. I'll just give the comment. Okay, first is a numpy. Import numpy as np. Np is my alias name, and import panda as pd. Import seaborn as sns from Matplotlib. Import pyplot splt. Okay, so let execute. Okay, मैं यहाँ पर ना सिंपल एक लाइन चार्ट बना रहा हूँ. ऑलराइट, प्लॉट विथ Matplotlib. We are using the line plot because see, this is ideal for the visualization trend over the time. Line plot are ideal over time. I'll do this comment so it will better understanding. We're going to do np dot line space. What I'm going to do 0, 10 or 100. This is nothing. I can say the 100 point from 0 to 10, right? And I will store this data to the x. The next is y equal to np dot sign, which is nothing my x. This is my data. Alright, I can able to see this data is the x is my this is, and then y, and then y, and then y is this is. Okay, so this is our data. Then what I am going to do, I will just plot this one with help of line plot. तो plot dot plot मैं यहाँ पर सिंपली वो डाटा को पास करो x और y. Alright, हमें now I have to be add the title. See here is nothing is written, but I want to give the title of this plot. Then what I have to do, plot dot title. Title is nothing. I can just say the line plot of sine function. Okay, and I like to also give the label y axis, and finally what I do, I'll to also give the one thing which is the grid, and I can say that this is true, and then plot that. So alright, so I can say this one the sine function. Showing how it varies with x. Okay, next is bar plot. bar plot, I can say bar plot
let me do the markdown. Okay, let me first, I have to create the sample data first. Sample data, the sample data I am just creating. This category is nothing. Category is equal to A, B and C and D. Then I have to be also create string content. I have to create the value. Value is right. Value I have to be create the 1. Let me create 5 7 6 7 8 4 5 7 8. Okay, then what I'm going to do, I have to be plot this one. So plot bar with respect to my category is this and value. See the title. The title is nothing. This is a bar plot. X level. X level is nothing. The category, and then the Y level is nothing. Is my value. I can say this is a plot. So title, and this is the value is my y axis, and this is a category is a x axis. And I can write here the, or what I write, value for category in a bar format. So the next is scatter plot. स्केटर प्लॉट बेसिकली काम कैसे करता है कि हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो फाइंड आउट करता है. सो आई कैन राइट हियर स्केटर प्लॉट. आई कैन से द स्केटर बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल. ओके, तो let me first I have to create the sample data. So sample data, और अपन को क्या करना है यहाँ पर, np dot random dot randit, और I have to be pass the, okay, let pass the 50. See, the 50 is a random, 50 is a random point for the x, क्योंकि ये value we have to be stored to the x, and I can say the 50 is random for x, or y also I am creating. Y is np dot random dot randit, sorry, rand, or 50, and I can write here for y. Alright, so मैं डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. यहाँ पर x is my this and the y is my this. Okay, so next creating scatter plot. So the first I have to be the plot dot okay, plot dot scatter, and I have to be pass the value is x and the y it should be visualized. Alright, और हमें क्या देना है, इनको टाइटल देना है. प्लॉट डॉट टाइटल, द टाइटल इज नथिंग, दिस इज स्केटर प्लॉट, एंड देन द एक्स एक्सिस, एक्स लेवल देना है हमें. तो एक्स लेवल इज नथिंग, इज द एक्स एक्सिस, और प्लॉट डॉट वाई लेवल इज नथिंग, दिस इज वाई एक्सिस, और फाइनली so. Alright, in order to find out the relationship between the two variable, but it should be the numericals variable.
अगर दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वी हैव टू बी यूज द स्कैटर प्लॉट. बट व्हाट इज द पर्पज? एंड क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ रैंडम डाटा पॉइंट. In this particular case, I have taken the data random. You can see the x data I have taken the random, and then y data I have also taken the random, and these are both of the numerical variable. Alright, then so the next है हमारा advanced plot with Seaborn. ये advanced level का है थोड़ा. ऑलराइट, ये हम लोग ना C1 के साथ काम करते हैं. ठीक है, C1 भी एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है. इट्स बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द मैटप्लोट्लिब. ओके, लेट मी प्लॉट द बॉक्स प्लॉट फर्स्ट. व्हाई आर यूजिंग द बॉक्स प्लॉट? द बॉक्स प्लॉट समराइज द डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हाईलाइट आउटलायर. तो नाउ हम लोग अभी बॉक्स प्लॉट के साथ काम करते हैं. ठीक है, तो यूजुअली मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि बॉक्स प्लॉट एंड हाईलाइट आउटलायर. ओके, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मेरे पास ना मैं एक लिस्ट में ना np डॉट एक रेंडम कुछ डाटा मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ जो कि है नॉर्मल. ऑलराइट, और मैं यहाँ पर एक 0 दे रहा हूँ STD स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट, और 100. मैं फॉर लूप यहाँ पर चलाता हूँ. फॉर स्टैंडर्ड डिविजन्स इन रेंज with respect to 1 and 4 data और data है हमारा. Let me not print this one, it's a huge value. Okay, हमारे पास डाटा है. अभी क्या करना है? I have to be plot. Okay, using box plot. So SNS box plot, and I have to give the data equal to the data which is nothing. Alright, so I have to give the plot dot title is nothing, is the box plot. You can say box plot, and my plot dot x level is nothing, is the x level is my distribution, and y level is nothing, y level is my value. Alright, and finally I have to be plot this ones. That's all. The distribution, so the of data with box plot. ऑलराइट, सो ये था हमारा बॉक्स प्लॉट का एग्जाम्पल. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हीट मैप की तरफ. हीट मैप विजुअलाइज मैट्रिक्स यूज फॉर कोरिलेशन मैट्रिक. ऑलराइट, तो इनको भी हम लोग प्लॉट करके देखते हैं. heat map, I can say the heat map and then use for correlation. Okay, so let me first create the sample data. np dot random dot rand, and with respect to 10 or 10, it will be sample data is here, and I can store this data, what I name, data 1. Okay,
So this is my sample data, and then right now I am going to give the core is nothing, is my NP, and this is a coefficient. Here I have to be passed the data 1. Okay, now I have to be create the heat map. Okay, so in order to create the heat map, create the heat map. So what I'm going to do, SNS heat map, and then I am passing the first is a core, yes this is, and then I am passing the A naught is nothing, this is my true work, and I have to pass the C map. I have to be passed the cool warm, I think is a fine, yeah, it's okay. And let me plot, this is work maybe, yes. So here you can just find out the relations between the variables. Right here the title of this particular chart is nothing, is the plot dot titles. Title is nothing, so I can just write is here is the heat map, and then the what I okay, well, so that's all. Display a heat map showing between variable. Alright, हमारा pair plot visualize relationship between all the pair of the variable. Okay, let me do the practicals. Pair plot, why should I use the pair plot? All pair of variable. Okay, so in order to create the data, I have to be create the pd dot data frame. Okay, and then here I am passing the A, I am passing here A, and with respect to A, p dot should be work or not, I don't know, np dot rand, and with respect to 100, let me see, it's passed, yes it's working. Okay, then comma, and then I am passing the B with respect to np dot random dot rand with respect to 100, and finally I am passing the C is nothing, is the np dot random dot rand, and with respect to 100, and this is my data. So now what I'm going to do, of pair plot, and simply I have giving the SNS pair plot with respect to my data is nothing, is what is the name of this data, let me give the data name is the df3. So finally we have plot the pair plot. So the title of this particular plot, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, plot dot title, and the title is nothing, so I can say this is the pair plot, and then I have to be so visualization combinations of column
in the data frame. ऑल राइट, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइजिंग विजुअलाइजेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं कस्टमाइजिंग विजुअलाइजेशन को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमाइज। फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन प्लॉट को विजुअलाइज करता हूँ, ठीक है। प्लॉट डॉट प्लॉट एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर बेसिकली लाइन प्लॉट को विजुअलाइज कर दिया। अगर हमें ना इसको अगर कलर चेंज करना है, ठीक है, सी इज टू ब्लू, ब्लू, ओके। तो हम इनको कलर को अभी चेंज भी कर सकते हैं। और हमें ना इसका लाइन स्टाइल को भी चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली स्टाइल शुड बी वर्क, आई थिंक लाइन स्टाइल with respect to its work. No, it's not working. Okay, no. Yes, मैंने कामा देना भूल गया था यहाँ पर। ओके, इज नथिंग इज द 2। अगर मैं इसको 6 दे रहा हूँ, इट शुड बी बिगर से। ऑलराइट, और उसके बाद में हमें टाइटल की तरफ चलते हैं। तो प्लॉट डॉट टाइटल इज नथिंग, आई कैन से it's a customized line plot. Yes, okay, customize line plot। हम लोग यहाँ पे भी इन लोगों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको फॉन्ट साइज, हमें ना इसको क्या देना है, फॉन्ट साइज विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, लेट डू द 4। ओके, दिस इज द 4, is not visible, I can give the 12. See, instead 12 I can able to also write the 16. So its font is right now is bigger. All right, और जो नेक्स्ट है हमारा है एक्स लेवल है, ठीक है। प्लॉट डॉट एक्स लेवल, द एक्स लेवल इज नथिंग, आई कैन से दिस इज एक्स axis and I can see the font size is nothing, I can able to pass the font size is 12, and then same is plot dot y level, and then I can pass the y axis is nothing, the font size, and then it should be have to 12. Alright, and then I can say the plot dot grid, and then grid I am passing the true, and finally I like to write so ये था हमारा कस्टमाइज विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइज विथ सीबॉर्न। अगर सीबॉर्न प्लॉट है, हम लोग उनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लेट मी डू दिस फर्स्ट। Customize the Seaborn. Customize the Seaborn plot. It's better. I can write here the SNS dot में यहाँ पर set style कुछ लेता हूँ, should become set style, okay, and I'd like to pass here the white grid, I think so. Then I have to pass the SNS box plot, and I'd like to pass the which data before हम लोग ने पहले डाटा दिया था, वही डाटा को मैं सेम पास कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट जो हमारा है टाइटल, लेट मी क्रॉस फर्स्ट दिस वन, ओके। और जो नेक्स्ट है हमारा प्लॉट डॉट टाइटल एंड द टाइप बॉक्स प्लॉट, and then finally I have to be plot dot, so it should be go. See guys, the style of this plot is changed to the white grid for alright। तो नेक्स्ट है हमारा कंबाइनिंग प्लॉट। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्लॉट है, अगर कंबाइन करना है, देन व्हाट टू डू। तो हम लोग ना
एक एग्जांपल के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई विल राइट द combining plot. I can say this one is the plot for more insight, and I will make this one mark down. Okay, plot figure, and I have to be passed the figure size is nothing. What I have to be passed the 6 and the 10 and 6. Okay, not a boxing and the box plot, and I have to pass the data equal to data. ये हमारे पास प्लॉट हो गया। और जो नेक्स्ट हमें ना कंबाइन जो करना है इनको, देन व्हाट आई हैव टू डू, एंड SNS stripe plot, and I have to pass the data equal to data, and I'll do the color is nothing, I can give the any color. Okay, the black is good, black, and I am passing the alpha value, should become the alpha, why not come color equal to black, alpha value equal to 0.5. let me check. Okay, alright. Title of this plot dot title, and I can find box and plot dot so that's all. मैंने यहाँ पर ना दो प्लॉट को एक साथ में कंबाइन कर दिया, ठीक है, जो कि है बॉक्स प्लॉट और स्ट्राइप प्लॉट है। और स्ट्राइप प्लॉट इज and the on the box plot to show the data point. Alright, so that's all guys. तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।